अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, समा मनी की एक और एपिसोड के साथ हम लोग फ्यूचर फेस्ट के डे 3 पे हाजिर हैं। जैसा कि हम लोग आपको डिफरेंट सीईओज और एग्जीक्यूटिव से मिलवाते आए हैं, उनसे वन ऑन वन चैट कराते आए हैं, उनके प्रोजेक्ट्स और उनके स्टार्टअप्स के बारे में भी उनसे इन्फॉर्मेशन ली है। तो इसी तरह के हमारे पास एक और गेस्ट मौजूद हैं, ज़बान सैयद साहब, जो कि ईथर एक कंपनी है, उसके सीईओ एंड पार्टनर हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इनका एग्जैक्टली स्टार्टअप है क्या और ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। How are you? Thank you. बिल्कुल ठीक ज़बान साहब, हाउ हैज़ इट बीन, हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन हियर एट फ्यूचर फेस्ट? Okay, so Future Fest, there's been great footfall. आज third day है, थोड़ा सा कम है, but yesterday it was really chaotic. So I think from that angle, इसमें I'm also happy with the fact कि एक entertainment side रखी हुई है, तो आप बाहर जाएं तो there's a whole different world. Music and food and वो एक soul fest type के समय. There's also conferences happening, so the boring, serious stuff going on in the auditoriums, and then these stalls and everything. Footfall बहुत ज़्यादा है, but again the quality maybe for each stall कि उनके customers कितना यहाँ पे आ रहे हैं, that is something that is very difficult to gauge. So have you seen like more of younger people coming here or all kinds of ages? Like what have you seen? वैसे तो demographic has been pretty much all kinds of people, all age groups. लेकिन again students या जो younger crowd है, I think that's focus of very few stalls here, right? But they are more, I would say, apt for what's outside. जैसे कि वो चाय कौन चल रही है आपकी and the entertainment side. But the companies here, they're probably looking for a little older, more mature, more decision-making role. More serious people. Serious people who can partner, who can be a potential client or some sort of a new business lead. ज़बान साहब, ईथर के बारे में बताएं, ईथर एक्चुअली है क्या और क्या करती है? So Ether is a full-fledged ad agency, but ad agency is a thing of the past. So we are a turnkey solution agency, or you can say we are a boutique agency catering to a wide cross-functional group of services, not limited to, but including research. So research is the first step. A lot of brands don't succeed because they skip this step. एकदम आएंगे कि design बना के दे दें. So research, and then that leads to insight, and you generate those insights. जिसकी basis पे you come up with a creative ideation or direction, and then there's a whole ecosystem. So that goes into design development, that goes into cascading. फिर उसी का digital leg होता है. Digital में जब आप जाते हैं तो उसकी एक media planning and buying भी होती है. But obviously we do other services which includes PR, influencer marketing, and reaching to people through one-on-one or direct or influencer marketing. And then उसके अलावा we also do productions, TVCs, DVCs, animated productions, short films. So yeah, it's pretty exciting. Kind of a one-stop shop? One-stop shop, and we are also catering to some international clients. In fact, if you ask me, the real juice is international clients. Sadly, our economy and our dollar parity is so bad कि consumer की buying power तो रोज़ कम होती जा रही है, हमें रुपये की value कम होती जा रही है. Unfortunately, पहले एक वक्त था कि client शौक से 5 लाख, for example, आपको महीने का retainer दे रहा था. अब जबकि वैल्यू रुपए की 10% रह गई है, वो अब 2.5 लाख देना चाहता है. सो इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज़ वाई लेगेसी एजेंसीज आर डाइंग. जो बहुत बड़े बड़े ऑफिस थे, 3 सिटीज़ में 4 कंपनीज बना ली हैं, बट नाउ द ओवरहेड्स, द पे रोल्स, दे हैव बिकम सच अ बिग इशू. दैट्स वाई द ले ऑफ्स, द सडन डाउन साइजिंग्स एंड ऑल. तो वी हैव वेरी हैंड पिक्ड पीपल. 2 generations basically. The मेरी generation है, you can say the seniors, 20-year experience, 18-15 year. That's the leadership. All the leadership, including myself, we worked with the top agencies of the world. I've worked with Ogilvy, JWT, Dentsu, and a lot of other big names. But now I think if we are in a position to change the dynamics of the game, so we have a lot of Gen Z on our team, because that's the future. Every brand is targeting Gen Z. That's becoming the most difficult to understand because they are socially and morally more selfless versus millennials who are very selfish. हम लोगों की अलग dynamics थे, तो we are the dying breed. So they are the future. So we lead them, and then they come up with the solutions and ideation. So it's exciting. Advertising की यही एक फ़ायदा है. It is very thankless, but at the end of the day उसके अंदर एक चस्का भी है, और वो यही है कि वो the spark never dies. Every day some new crisis, some new brand, and you don't get, it's not monotonous. It's not a bank. 20 साल बैंक की नौकरी, तनख्वाह, ग्रेजुएटी तो बहुत बन जाएगी, but there's no excitement in it, I think. Because creativity based काम है ना, वो तो हर वक्त नया होता है, repetitive है, monotonous हो जाता है, burnout उसमें ज़्यादा होता है. इसमें एक दिन एक client की चलें, मसाइल से आप फारिग हुए, एक different किस्म की आपके सामने challenge कल को आ जाएगा. So if you have the spark in you, you will
You will So like is it such. safe to say that आप लोग basically brands को build करते हैं from the scratch? So if someone has money, उनको कोई brand बनाना है. So will you help them that way? That is exactly They what just we provide do. you with the money. They कहें कि भाई Absolutely हमारे what we पैसे do, हैं. but it has to there's a method to the madness also. So it has to be structured. कई लोग आ जाते हैं जी मेरे पास पैसे हैं ये कर दें, बट वो उसके स्टेप्स नहीं समझते. वो अगेन ये जो मैंने आपको पूरा रिसर्च से एक प्रोसेस समझाया वो इसको नहीं समझते. वो कह देंगे जी मेरा की विजुअल बना के दे दें, मुझे कल ऐड लगाना है, मुझे एक ऐड बनवाना है. सो दैट इज़ तो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट. इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग. इफ अ ब्रांड वांट्स टू बिल्ड इट नीड्स कंसर्टेड एफर्ट्स और अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट एन ओवरनाइट. कोई आपको विजिट का यहाँ पे मैजिक वॉन्ड नहीं है कि कोई आपको मैजिक से एक कैंपेन आएगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा. सो लोग अक्सर ये भी करते हैं कैंपेन के बाद कहते हैं यार एक साल कुछ नहीं किया, कहते हैं यार ब्रांड देखो कहाँ था कहाँ पहुँच गया. दे डोंट अंडरस्टैंड कि यू नीड टू रिफ्रेश द ब्रांड अगेन थ्रू अ न्यू कॉपी, थ्रू समथिंग डिफरेंट, थ्रू समथिंग न्यू रेलिवेंट. ब्रांड्स कोविड में ये प्रूव हो गया कि द ब्रांड्स विच वर ओनली सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स दे स्टार्टेड डाइंग. कंज्यूमर वांटेड मोर फ्रॉम अ ब्रांड. अब उसको सिर्फ शैम्पू नहीं लेना, अब उसको देखना है कि शैम्पू सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, ये कोई सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ कर रहा है, ये किसी एनजीओ को कुछ दे रहा है. सो ये लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो गई. मेंटल हेल्थ बड़ा एक टॉपिक बन गया. सो बहुत सारी चीज़ें तो कोविड के बाद से और ज़्यादा चेंज हो गई. So once आपने एक ब्रांड बिल्ड कर दिया है, आप उसको रन करने में भी हेल्प करते हैं. And for a later stage, do you help them with the maintenance also? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. सो फ्रॉम अ वेबसाइट टू अ big brand, and so we've launched a car. It's a new entrant in the consumer market. It's called Foreland Safari. The Foreland Safari was a scratch से हम लोगों को एक चीज़ करनी थी. वैसे भी we are a new agency, startup mindset है हमारा. So it was very exciting. Completed 1 year in December. Yeah, so it was very exciting. We did a great digital launch. We did everything for them, PR, production, some great digital content. And we had some tremendous response from the consumer. They met all the targets. Client is super happy. They will be coming in other car models also. तो एक तो ये चीज़ हमने launch कर दी. अब हम उसको भूल जाएं, हम ये नहीं करते. So अब since then we start always on content. हर महीने भी तो आपको पोस्टें देखनी है, आपका कंटेंट आना है. बेशक वो रील्स हैं, बेशक वो इंस्टा पोस्ट हैं, फेसबुक पोस्ट हैं, तो कुछ ना कुछ नया डेवलप करते रहते हैं. तो there's a constant plan. महीने के शुरू में हम क्लाइंट को देते हैं, उनकी उसमें कोई फीडबैक होती है तो ठीक है, वरना हम लॉक कर लेते हैं कि ये एक महीने का कंटेंट प्लान है. उसके अगेंस्ट देन वी डिज़ाइन those ads, those posts, those videos, whatever is required. उसके पीछे क्लाइंट के ऊपर है. कोई किसी चीज़ के पीछे मीडिया लगाना चाहते हैं, वी प्रोवाइड द मीडिया सर्विसेज, फेसबुक, इंस्टा, गूगल टारगेटेड एड्स, whatever. तो वो एक मीडिया स्ट्रैटेजी भी उसके साथ होती है. एंड देन अगेन द 3 काइंड्स ऑफ कंटेंट. तो हीरो कंटेंट तो साल का एक ब्रांड बिल्डिंग कंटेंट होता है. फिर हब कंटेंट होता है आपका, विच इज़ एनी बिग अनाउंसमेंट, एनीथिंग मंथली बाय मंथली चीज़ आ रही है. फिर होता है ऑलवेज ऑन कंटेंट. कुछ भी नहीं हो रहा, ब्रांड डेड भी है, आपका पेज नहीं डेड हो सकता, वरना कंज्यूमर से आप पीछे हो जाएंगे. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, सिंपल. सो ये चीज़ें हैं जो कि हम लोग वी डील विद दिस एवरी डे. आई थिंक यू डूइंग बेसिकली आप लोग एक ही जगह पर बहुत सारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर वन सिंगल एंटिटी. बिल्कुल, वी आर वेरी लीन एफिशिएंट टीम्स. अब वो आपको ये भी पता है कि विद टाइम एंड द एआई का ज़माना आ गया, रिडंडेंसीज ख़त्म हो गई हैं. पहली रिडंडेंसीज खत्म हो गई थी, कंपनीज एक बंदे से 3 का काम करवा रही हैं, और अब एआई हैज बिकम अ इशू. आज एक स्पीकर यहाँ पे बोल रहे थे कि बाय 2025, व्हिच इज लाइक नेक्स्ट ईयर, 85 million people will lose their jobs. 85 million thanks to AI. It's not very encouraging, but again, those are the dynamics. So you have to be at top of your game, and that's why we try at Ether. We try to do that. We go out of the way for the clients, and alhamdulillah, we have some very satisfied clients. Devan sir, we wish Ether and you all the very best. And thank you for talking to SAMAA. It was a pleasure.